तो दोस्तों हम लोग वापस आ चुके हैं इन द वर्ल्ड ऑफ द विचर। और ऐसा आज प्लान तो एल्डन रिंग का दुनिया में जाने का था, पर क्या करें, विचर के पास टाइम ही नहीं है। सो इस वजह से हम सोचे कि यहीं आ जाते हैं और विचर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें हम एक एक्सपर्ट हैं। राइट, गेरॉल्ट भी एक्सपर्ट है, आई मीन वही ही एक्सपर्ट है। पर कोई नहीं, हम लोग चलते हैं। आज हम लोग को एक मर्चेंट के पास जाना है। हमको एग्जैक्टली मालूम नहीं उसको हम लोग से क्या काम है। काफ़ी समय पहले हम ये कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, पर टाइम नहीं मिला। तो कोई नहीं, उसके पास जाते हैं, पता करते हैं क्या काम है उसको, एक विचर से। ठीक है, ये मर्चेंट हम लोग को यहाँ बुलाया तो था, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। What the hell? ये पूरा जगह डिस्ट्रॉयड है। Camp's abandoned, but a lot of this damage is recent. Guess I arrived just a little too late. वही तो हम लोग को लगता है देरी हो गया। Still. कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं। हम होप करते हैं कोई तो जिंदा बचाओ। ये पक्का एक मॉन्स्टर का काम है। ऐसा मैसेकर? Paw prints, beastly ones, that's clear. Just on this spot though. Aerial attack must have been. Aerial attack? यानी कि एक वाइब्रेन हो सकता है, या फिर एक कॉकट्रेस ड्रैगोनेट का ही काम है कोई। Blood of the fresh variety. Monster attack was recent. Okay, मतलब कि कुछ देर पहले ही हुआ है, या फिर कुछ दिन पहले भी हो सकता है। Okay, एक लाश भी है यहाँ। Man, bled to death. Big beast inflicted these wounds. Clear from the claw marks. Must have a toothy smile too, judging by what ripped his throat open. Damn. Draconid. Gotta be. Wait though. Maybe a basilisk? Except these prints don't belong to any variety I know. Just a little different. Little different? Basilisk नहीं है तो क्या होगा? कोई नया मॉन्स्टर आया क्या एरिया में? ये कौन है? Area's dangerous. I'd say there's a basilisk nesting around here. You'd be wise to remain at some distance. वही तो दोस्त। Yes, I'm familiar with the matter, and quite proud to say a basilisk does nest here. I look after it personally. क्या? Look after it? Basilisk? It's not exactly a pet. Beasts murdering folk who come through here. Just a minute. It does not murder those who do not trespass upon its territory. ऐसा क्या? I posted a number of signs, warnings, specifically to prevent anyone from coming to वो any तो harm. वार्निंग है। Well, a lot of good they did. Got a freshly mangled corpse right here. Most likely a merchant, the poor bloke. Just today, I learned 2 traders had chosen this route despite the signs. क्या I बेवकूफी came करता as है quick इंसान as I लोग। could to warn them. Too late, alas. I instructed my servants. They shall take the body, return it to the family with a generous sum as recompense. तुम फैमिली लोग को पेमेंट देता है? ये जो लोग मरता है उस बेसिलिस्क से तुम वो लोग को पैसा देता है, ये अच्छा बात है, लेकिन Pay the victim's family's compensation? Why? These monster? lands have been my family's for decades, granted to us by Duchess Ademarta. Beyond them, the basilisk ventures not, hunts not, it does not kill or destroy, provided it is not provoked. Yet if it does destroy, if it kills, I compensate all for the loss, from my own coffers. Your coffers. Got a store of sons and husbands in there to compensate for those shredded वही by तो your beast? मॉन्स्टर। Naturally, I cannot revive the dead, but I do make generous restitution to their loved ones. Just last summer, I paid a leather tooler's widow 800 crowns. Wow. This unfortunate merchant's family to be duly indemnified as well. ये बेसिलिस्क का लोकेशन बता सकता है तुम? Where's the मतलब basilisk sure नहीं है nesting? Any idea? Of course, I have an idea, but you don't really expect me to tell you. कि Those are not toy swords. I know your intentions. हम लोग Find मारने it myself then. Easy to track with its distinct paw prints. Mentioned 2 merchants, so I might also look for the other corpse. गेरॉल्ट फुल मूड में मारने के लिए, हाँ, मॉन्स्टर को। पर वो मर्चेंट, हम लोग क्या करें, उस बेसिलिस्क को मारे कि नहीं? पर गेरॉल्ट हमसे पूछा नहीं। I mean, मॉन्स्टर का एरिया में कोई एंटर करेगा तो वो मारेगा ही। हमको
इंसान लोग को लेकिन वो मार रहा है, पर उसका भी गलती नहीं है यार। यहाँ पे वार्निंग डाला था ये कि यहाँ कोई नहीं आए, लेकिन तब पर भी बेवकूफ लोग यहाँ पे कैंप कर रहा था। Basilisk scales are usually thicker, not nearly so fine. Could be more sensitive to fire, this one. Alas, it is true. Your caste has a terrible fear of fire. She's a highly sensitive creature. Rid your mind of any thought to kill her. You would destroy the last of a species. Strange. These burn marks. Beast's venom make them? Subspecies must be highly toxic. It is so indeed. ये ज़्यादा ही ज्ञान From जानता a है। sterling basilisk festers long. Need to brew a potion that'll neutralize that. हम लोग उसको ढूंढ ही लेंगे कुछ देर में। Busted barrels. Contents spilled all over. Must have been tannin in there. Used to treat leather. Beast smashed the barrels. That's how the scent got on the scale. Yokoko is so very curious. Strong scents especially intrigue her. The barrels, they must have drawn her in. Drawn her to the caravan. Busted barrels slimed with venom. Hallmarks of an attack. Basilisk must have caught the second victim here. Anyway, got 2 scents. Venom and tannin. Ought to be enough to track the beast. Why track her at all? अरे Your caste is protected. Her death would forever destabilize the ecosystem. Who knows what would happen? I see unforeseeable consequences down the line. Simply refrain from provoking her. Harm her not, and she too will leave you untouched. I've long suspected they do it on purpose. Scent their goods. They seek to lure the basilisk to destroy their wares. It allows them to demand compensation from their assurers. क्या? पता नहीं क्या सच है क्या झूठ, लेकिन हम लोग विचर है, हम लोग को मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। वो इंसान लोग को मार रहा है, लेकिन ये बोल रहा है वो कोई आखिरी स्पीशीज है बैसिलिस्क का, और हम लोग ढूंढते हैं उसको। गेरोल्ट मूड में मारने का हम कुछ कर भी नहीं सकते। ये तो Blood stains. Clear as day. बैसिलिस्क को चोट लगा है? ये ब्लड किसका है? इंसान लोग तो वहां मरा था। Poor man. A horrid death, truly. वेट, ये खून है किसका? Sense perceptible again. वेट, नहीं, कोई इंसान ही मरा है यहाँ पे। Just as I expected. Second victim, but relatively unscathed. Basilisk must have been dragging him back to its nest for later. Dropped him for some reason. Wonder why. So यहाँ पे वो बॉडी गिरा दिया। कॉन्ट्रैक्ट? What the hell? हमको इससे एक नोट मिला और ये लोग सच में उसका कहना सही था। काउंट का इंसान लोग कितना बड़ा बेवकूफ होता है। ये लोग जानबूझ के यहाँ से जाता था ताकि ये लोग का गुड्स डिस्ट्रॉय हो और ये लोग को कंपनसेशन मिले, लेकिन इस बार गुड्स के साथ साथ ये लोग को भी डिस्ट्रॉय कर दिया मॉन्स्टर। डैम इट, हम लोग को इस मॉन्स्टर को खोजना होगा। या फिर है क्या चीज? इसको द वाइट टेरर बोल रहा है ये लोग। हाँ? Here's something, but it's no basilisk screech. Human voices. वेट, वहाँ इंसान लोग हैं? What the? ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? What the? Warriors? ये लोग क्या ड्रैगन हंटर्स जैसा लग रहा है ये लोग। Harry, prepare your equipment. Beast wandered off somewheres. We got to lure it back. वेट, ये लोग उसको मार रहा है? And who might you be? विचर का काम कर रहा है ये Funny. लोग, हाँ? About to ask you the same. They call us the Reavers. मालूम है हमको ये लोग के बारे में। Reavers? Wouldn't happen to hail from Crinfrid, would you? ये लोग ड्रैगन हंट पे ज्वाइन किया था But गेरोल्ट। how's it you know? And again, who the hell are you? Geralt of Rivia. I'm a witcher. Know your brethren in arms. Boholt, Kenneton Desperate, New Boy too. Ah, you're that witcher. Aye, Boholt mentioned you. Said you swing a mean sword. Yeah. A professional. Good you came along. Could take on the brute together. Talk is the venom's something horrifying. Could use another pair of hands. Fee what we've gotten from the guild. We'll share it fair and square. चुप रहे बेवकूफ। You in? ये विचर का काम this है। hurts my ears and pains my heart. You aim to kill your caste? It cannot be. The creature is protected. If you fear to lose the guild's reward, I shall repay it.
and reward you doubly to leave the beast be. You cannot slay the last living specimen of a near-extinct subspecies. Aha. Willing to pay, are you? Long as we do nothing? That's rather novel. What say you to that, master? Far as I know, beasts culled the human race by 5 already. नहीं मारेंगे, हम छोड़ देंगे इस बार. Basilisk lives for now. We're not gonna kill it. A witcher defending a beast. Ever seen that, lads? You like them peaches? Ah, no scrapping with filth today, it seems. But, you made some mention of coin, as I वो recall. monster को मारने का मन नहीं कर रहा हमको. And the word once given, वो last surviving species है और इसका Your pet है. share, Witcher. Easiest job I've ever done. Godspeed, Witcher. Strange working with you. Strange, but nice. Godspeed, boys. कल जाओ हम लोग. you spared your cust. I thank you. And be assured, I'll take great care she not dine on any other souls. Gotta try harder. Figure out a way to keep folk out of this area. That Wait I up. shall do. Master, you must accept more, be it a symbolic sum. Had you not come along, the reefers would surely have slain my youngest. Trust me, वो लोग मर जाता उसको स्ले करने का चक्कर में. और हमको और पैसा नहीं चाहिए, छोड़ दो. Don't need any more. Rather you paid it out to the families of your pet's victims. वही तो. Noble of you, Master. I shall take the advice to heart. Your cust has flown her nest. वो है, दिखती कैसी है? Must have sensed a threat. Likely to return eventually, though. She'll return. Always does. I suspect I might even know where she's gone. I tracked her away and believe she might have found a new mate. It's an ordinary basilisk, not a silvery one. But something might come of it. Who knows? Your cust could lay new eggs. Perhaps produce an entirely new crossbreed. ये सब ठीक नहीं हो Sure रहा. hope not. Take care. इंसान के लिए मॉन्स्टर लोग खतरनाक है. लोगों को आज भी मॉन्स्टर देखने नहीं मिला. हाँ, पर क्या करें, कोई नहीं. well, इस मॉन्स्टर को हम छोड़ दिए. I mean, भले ये 4-5 इंसान को ऑलरेडी मार चुका था, पर हाँ, इसमें उसका गलती नहीं था. वो अपना टेरिटरी में रहता था और इंसान लोग उसको एंटर किया, जबकि वो लोग को मालूम था कि यहाँ पे खतरनाक मॉन्स्टर रहता है जो इंसान लोग को मारता है, और ऊपर से वो आदमी उसका देखभाल करता है. मन नहीं किया मारने का, पर कोई नहीं, आज के लिए बस इतना ही. फिर मिलेंगे जल्दी. अभी के लिए अलविदा.